Let me begin with a quick introduction of the distinguished members of the company on the dais today with us. We have Mr. Suhas Donti Manjunatha, whole-time director and CEO Emmvee, and Mr. Pawan Kumar Jain, CFO Emmvee. It gives me an immense pleasure to introduce the company. Emmvee, with a track record of over 18 years, is India's second largest pure-play integrated solar PV module and solar cell manufacturer, and one of the largest PV module manufacturer in India in terms of production capacity as on 31st March 2025. As of June 25, the company has a solar PV module production capacity of 7.80 gigawatts and solar cell production capacity of 2.94 gigawatts. It is one of the first companies in India to adopt higher efficiency TOPCon technology to manufacture solar cells, and are on limited number of solar cell manufacturers in India as of 31st March 2025. We are extremely glad to launch Emmvee's IPO. Now let me quickly remind you on the offer details. The issue opens on Tuesday, 11th November 2025. The issue closes on Thursday, 13th November. The anchor bidding will be concluded one working day prior, that is 10th of November, Monday. Now, the total issue size of the company is 2,900 crores. It's a mix of fresh and OFS. The fresh issue size comprises of 2,143.862 crores and offer for sale of 756.138 crores. The price band for the IPO is set at 206 to 217 per equity share. The minimum bid lot is 69 equity shares and in multiples of 69 shares thereafter. We sincerely look forward for your support to make this IPO a huge success. Now, there will be a small AV presentation of the company which will be played. Followed by, I would like to invite the CEO, Mr. Suhas, for the presentation. Thank you. Largest pure-play integrated module and cell manufacturer with a TOPCon cell production line of 2.94 gigawatt and a 5.1% market share. With an early mover advantage, we are amongst the limited manufacturers to leverage higher efficiency TOPCon technology through our collaboration with Fraunhofer. Our advanced manufacturing units drive efficient and gigawatt and 2.94 gigawatt solar cell production capacity. We also have a track record of delivering quality products with less than 0.008% average warranty claim and 2.04 gigawatts supplied over the last 3 financial years. Our valued relationship with a diverse customer base includes 543 customers served, 32.40% repeat customers, and a 5.36 gigawatt order book. All of this is driven by an experienced promoter, backed by a professional senior management team with strong domain expertise. Together, we are building a resilient solar future that powers growth, trust, and sustainability. Namaskar everyone. Thank you for coming here. I'll just walk you through the presentation. So thanks for the opportunity. So before I just start the presentation, I'd just like to tell about the story of Emmvee and how we began. So it was founded by my father, Mr. Manjunath, and he comes from a very humble beginning. So as a commerce graduate, he used to work while studying. So he used to do some of the other trading activities, could be like grocery trading or anything as such. And while going to evening college, he completed his graduation. And finally, after he graduated, he started a retail store in Bangalore with selling glass and plywood. With an ambition to always start in manufacturing industry, he came across a real problem that the region was facing back then, that is massive power cuts, not allowing a shower to be taken in the morning or good hot
shower. It was an idea that came across that solar water heater could be a solution. So with that in mind, he started manufacturing solar water heaters under the company Emmvee Solar in Emmvee Solar Systems in 1992. And with that, it was the journey started. And in 2006, after a successful run of Emmvee Solar, in 2006, we also started PV module manufacturing with Emmvee Photovoltaic power plant. And with that, since 2006, the journey of a lot of ups and downs in the industry has seen a lot of technology changes, a lot of region changes. But the company has built strong, profitable year on year with the discipline the company has maintained since inception. So I'll just give you a brief overview of what the company is today. So with over 18 years of manufacturing experience, today we stand as one of the leading manufacturers. And PV module experience for the last 18 years, it is important to be a relevant player. And today we are an integrated player with both cell and PV module manufacturing capability. And more importantly, the cell capacity that we have added is a TOPCon cell capacity, and as Sagar was saying, we are one of the first companies in India to start TOPCon solar manufacturing, solar cell manufacturing capacity. So today, with the 7.8 gigawatt of module manufacturing and 2.94 gigawatt of cell manufacturing, we have a strong track record of delivering high quality products. And with the same track record, you can see our warranty claim rate, which is the average of the last 3 financial years, is less than 0.008%. And in fact, the last financial year, our warranty claim rate was less than 0.0002%. So it's an extremely quality oriented, very strategic company. And more importantly, it is completely bootstrapped, right? We don't have any private equity or any other dilution apart from the family holding as of today. And with that being said, I'd like to just focus without getting into the history of Emmvee, but just focus on the agility the company has had since beginning of inception. So that means that today, in 2006 when we started, there was no market for PV modules in India. So back then, the application of PV modules was primarily your street lights, your traffic lights, your home lighting was the primary applications in India. So the market for Emmvee, 100% of its product was exported to Europe, Western Europe, from 2006 until 2012, 2013. So as we were supplying to Europe, we expanded our capacities from a very small 15 megawatt line, which was having the first fully automated towers to the restaurant. We expanded to 135 megawatt. So just to let you know कि हमारा जो कंपनी है, जो कि अभी आपने सुहास ने बताया कि पिछले 18 साल में हमारा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है और उसके लिए हम 18 साल से कोशिश कर रहे हैं. तो अभी हमारा पिछले अगर आप देखेंगे 3 साल में मेरा 1500 मेगावाट का हमारा कंपनी का कैपेसिटी था 2023 एंड में. तो 2025 एंड में 6000 मेगावाट हो गया और आज की डेट में 7800 मेगावाट है. एक मॉड्यूल लाइन अभी हम कमीशन कर रहे हैं, वो अभी नवंबर या दिसंबर एंड तक कमीशन हो जाएगा. तो उसका बाद में हमारा टोटल मॉड्यूल का कैपेसिटी 10,300 मेगावाट हो जाएगा. और हमने ये जो कैपेसिटी अगर आप ग्रोथ देखेंगे 3 साल में 1500 मेगावाट से 6000 के 4 गुना बढ़ गया. और अभी और हम ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट कम से कम 6 गुना हमारा कैपेसिटी हो जाएगा जो हमारा जो 2023 में था. सिमिलरली हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन है 218 मेगावाट था 2023 में, वो बढ़ते भी करीब 7 गुना होकर 1500 मेगावाट हो गया. और अभी इस साल में उसका और भी बढ़ेगा.
इस साल हमारा प्रोडक्शन जो है 237 मेगावाट क्वार्टर 1 में था पिछले साल, उसके कंपेरिजन अभी 635 मेगावाट हो गया है। तो जो कंपनी ने जो कैपेसिटी एडिशन की उसका फायदा कंपनी को भी मिल रहा है। उसके अलावा हमने एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी जिसको हम टॉपकॉन बोलते हैं, जो सुहास ने आपको बताया, उसका हमने कमीशन 1 सितंबर 2024 में 2943 मेगावाट का हमने सेल प्लांट लगाया था, जो जर्मन हमने इक्विपमेंट खरीदे थे। उसके बेसिस पे हमने ये 2.943 गीगावाट हमने कमीशन किया, और पिछले साल वो 7 महीने प्लांट चला था, तो उसका प्रोडक्शन 533 मेगावाट था। और अभी इस क्वार्टर में ऑलरेडी हम करीब 60% करके हम उसको 360 मेगावाट हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, और इन्हीं सेल को हम मॉड्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली हमारा जो ऑर्डर बुक है वो करीब 4900 मेगावाट था मार्च एंड में, वो अभी करीब 5300 मेगावाट के करीब है। और ये जो ऑर्डर बुक है हमारा, इसको रियल ऑर्डर बुक है, इसमें कोई भी पाइपलाइन का ऑर्डर बुक नहीं है। जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो फर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें तुमको एडवांस मिल गया है, एलसी वगैरह ओपन हो गया है, तो इसमें हमारा कोई भी लेटर ऑफ इंटेंट या एमओयू वगैरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और हम जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमको 12 से 18 महीने में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आई थिंक आपकी रुचि ज़्यादा होगी। तो कंपनी ने अगेन जितना कैपेसिटी बढ़ाया, प्रोडक्शन किया, उसका जो फायदा है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो फाइनेंशियल नंबर में भी दिख रहे हैं। हमने करीब 618 करोड़ का हमारा टॉप लाइन था 2023 में, वो बढ़ के 2335 करोड़ हो गया बाई मार्च एंड। करीब इसमें हमको पिछले 3 साल में 94% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिला है हमको। और ऑलरेडी भी हम पिछले 3 महीने में 1028 करोड़ के करीब हम इसका रेवेन्यू कर चुके हैं। वो करीब 40% ऑलरेडी पिछले पूरे साल के रेवेन्यू का है। और हमारा जो एबिडा मार्जिन है, अगर आप राइट साइड में टॉप पे देखेंगे तो हमारा एबिडा मार्जिन भी 15.8% से बढ़ के करीब 31% हो गया था पिछले साल में 2022 के कंपैरिजन में। और अभी इस एक क्वार्टर के अंदर में भी हमको करीब 34% का हमको एबिडा मार्जिन मिला है। तो हमारा एबिडा जो है वो 722 करोड़ था 2023-25 में, और अभी करीब 347 करोड़ का हमारा एबिडा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आल्सो 15.8, बहुत कम था, 1.45% इन FY23। FY25 में वो करीब 16% हो गया है, और अभी हमारा 167 करोड़ ऑलरेडी हो गया है, 187 rather, और उसका करीब 18.26% हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है। सिमिलरली कैपिटल और रिटर्न ऑन कैपिटल